Friends, so previous classes completed the graph of sine, tan and sec. Similarly, draw the graph of cos and cot and cosec. So now start example number 6, page number 61. Example number 6, page number 61. Example number 6. So example 6 is cos x given. Cos x is equal to minus 3 by 5. Cos x is equal to given minus 3 by 5 and x lies in the third quadrant. Given x belong in third quadrant. Find the value of other 5 trigonometric function. Since there are 6 trigonometrical ratio, that is 6 trigonometric function, and one value is given, cos given, find remaining 5 trigonometric ratio, that is sin, tan, cos, sec already. So cos x given and x belong in third quadrant, use formula. Since sin square x is equal to 1 minus cos square x, sin square x equal to 1 minus cos square x, put value cos x, cos value minus 3 by 5, its square 9 by 25, minus 3 square 9. Now taking LCM, so 25 minus 9, that is 16 by 25. This is the value of sin square x. So sin x is equal to plus minus square root 16 by 25. Now find root of 16 and 25. So is equal to plus minus 4 by 5. This is the value of sin x. And the value of sin x, the sign of value of sin x depend on x. Here given x belong in third quadrant. Since x belong in third quadrant, and in third quadrant sign is negative, so therefore sin x is equal to minus 4 by 5. Now find tan x. Since tan x is equal to sin x by cos x, ये नेगेटिव क्यों होगा समझ में आ गया. Since x belong in third quadrant and in third quadrant sin value is negative, so sin x equal to minus 4 by 5. Put value sin and cos. Sin is equal to minus 4 by 5 and cos x is equal to minus 3 by 5. This 5 cancel, minus minus cancel also, so tan x is equal to 4 by 3. Now find its reciprocal cot x. So cot x is equal to 3 by 4 and sec x equal to reciprocal of cos minus 5 by 3 and cos x equal to reciprocal of sin minus 5 by 4. तो any one trigonometrical ratio value given होगा and x given any one quadrant, then find remaining trigonometric ratio. Find कर लेंगे value ये. So now same as example number 7, cot x given and x belong in second quadrant. Find कर लेंगे. Now example number 8. Read question. What is example number 8?
So example 8 is find the value of sine 31 pi by 3. Find the value of sine 31 pi by 3. 31 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालना है। आप वैल्यू जान रहे हो किसका किसका, 0, 30, 45, 60, 90, इतने के वैल्यू जानते हैं, क्लास 10th पे पढ़ चुके हैं आप लोग। बट यहाँ पे है 31 पाई बाई 3, दैट ये एंगल एक्यूट के फॉर्म में होना चाहिए। फ्रॉम 0 to 90 के बीच का हम वैल्यू जानते हैं एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ। सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस एंगल into acute angle form. So here 31 and the divisor is 3. When 31 is divided by 3, then quotient is 10. Quotient is 10. So this can written sine, this can written 10 pi plus pi by 3. ये 10 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। इसको अब डिवाइड किए हो 31 को, तो कोसेंट क्या आएगा, 10। वही लिखे हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। आप एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करोगे 30 पाई प्लस पाई 31 पाई आ गया। ये समझ में आ गया ये। नाउ चेक दैट दिस एंगल लाई इन विच क्वाड्रेंट। सो 10 पाई दैट इज, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 10 पाई प्लस, 10 पाई प्लस है। सो 10 पाई प्लस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव and pi no change. So this equal to sine pi by 3, and the value of that is sine theta, here theta is pi by 3, and the value of sine pi by 3 is root 3 by 2. So this is the value of this. One more formula, since sine pi minus theta, sine pi minus theta, this angle line second quadrant, pi minus theta, in second quadrant sine positive and pi no change. So sine pi minus theta is sine theta. Now sine 2 pi minus theta, sine 2 pi minus theta, this sine 2 pi minus theta lie in fourth quadrant, 2 pi less than theta, that is fourth quadrant, and in fourth quadrant the value of sine is negative and 2 pi no change, so minus sine theta. Now sine 3 pi minus theta, check that this 3 pi minus theta lie in which quadrant, 3 pi minus theta, this is pi, 2 pi, 3 pi minus theta, that is lie in second quadrant, 3 pi में माइनस कर रहे हो, and in second quadrant sine value positive and pi no change, so same as sine theta. So you are seeing that here coefficient of y, one more value, suppose sine 4 pi minus theta, so this 4 pi minus theta lie in fourth quadrant, and in fourth quadrant sine is negative and pi no change, so minus sine theta. तो आप क्या देख रहे हो, इधर पाई का कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट इज ऑड, वैल्यू आ गया साइन थीटा। हियर पाई कोफिशिएंट इज 2, दैट इज इवन, तो वैल्यू आ गया माइनस साइन थीटा। अगेन पाई कोफिशिएंट इज 3, दैट इज ऑड, प्लस साइन थीटा वैल्यू। पाई कोफिशिएंट इज 4, दैट इज इवन, देन माइनस साइन थीटा। सो आप सिमिलरली वैल्यू निकाल सकते हो 5 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा।
So formula is sin n pi minus theta, n pi minus theta, sin n pi माइनस थीटा। आप इस पे निगेटिव एंगल पे भी चेक कर सकते हो। ये सपोज वैल्यू पुट कर रहे हैं निगेटिव, दैट इज हम पुट किए वैल्यू साइन माइनस पाई माइनस थीटा, साइन माइनस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे हम पाई का कोफिशिएंट क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव। सो दिस कैन रिटेन साइन टेकिंग माइनस कॉमन पाई प्लस थीटा, माइनस कॉमन ले लिए, देन यूज फॉर्मूला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। So minus sin pi plus theta, and this pi plus theta lie in third quadrant. So in third quadrant sin is negative and pi no change, so value it's minus, so minus minus sin theta, so becomes plus sin theta. So same as that is कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। सो सिमिलरली आप फाइंड करोगे वैल्यू साइन माइनस 2 पाई माइनस थीटा सेम एज माइनस साइन थीटा, सेम वैल्यू आएंगे। तो आप यह पाई कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव इंटीजर दें या नेगेटिव इंटीजर दें, देयर इज नो इफेक्ट द वैल्यू ऑफ साइन। सो साइन n पाई माइनस थीटा when n suppose odd, then in odd case same value sin theta, here coefficient of pi 3 that is odd, same value sin theta. So this is equal to sin theta if n is an odd integer. If n is an odd integer, then sin n pi minus theta is equal to sin theta, and this value is minus sin theta if n is an even integer। यदि इवन इंटीजर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सो दिस इज ए फार्मूला। सिमिलरली साइन n पाई प्लस थीटा, साइन n पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, this pi plus theta, first check that this angle lie in which quadrant, pi plus theta lie in third quadrant, and in third quadrant sin is negative and pi no change, so value is minus sin theta. And sin 2 pi plus theta, this sin 2 pi plus theta lie in first quadrant because 2 pi plus theta, in first quadrant all are positive and 2 pi no change, so this is equal to sin theta. तो आप क्या देख रहे हो, पाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, दैट इज ऑड, वैल्यू माइनस, पाई कोफिशिएंट इवन, देन वैल्यू प्लस। सो फार्मूला इज साइन n पाई प्लस थीटा, दिस इक्वल टू माइनस साइन थीटा इफ n इज ऑड इंटीजर, if n is an odd integer, n is an odd integer, and value becomes plus, that is sin theta if n is an even integer, n is an even integer. So this is the formula of sin n pi plus theta. Similarly, since cos pi minus theta, this angle lie in second quadrant, in second quadrant value is negative and pi no change, so minus cos theta, and cos 2 pi minus theta
This angle lie in fourth quadrant. In fourth quadrant cos is positive, so value same is cos theta. So coefficient of pi odd, then value minus, coefficient of pi even, then value is plus. So formula is cos n pi minus theta. There are two value. First value is minus cos theta if n is an odd integer, and next value is cos theta if n is an even integer. So this is the formula of cos n pi plus theta. Similarly, cos pi plus theta, this angle lie in third quadrant, pi plus theta. In third quadrant cos negative, so value minus cos theta, and cos 2 pi plus theta. This angle lie in fourth quadrant, and in fourth quadrant all are positive, and 2 pi no change, so value is cos theta. So formula is cos n pi plus theta is equal to, first value is minus cos theta if n is an odd integer, and next value is cos theta if n is an even integer. So this is the formula of cos n pi plus theta. Similarly, tan n pi plus theta. Tan n pi plus theta. Since tan pi minus theta angle lies second quadrant, and second quadrant is negative, pi no change, so minus tan theta, and 2 pi minus theta, this angle lie in fourth quadrant, and fourth quadrant tan also negative, so minus tan theta. So even or odd, both are negative, same 3 pi, both are negative. Therefore formula is sin n pi minus theta is equal to minus theta for all n belongs to z. ये सभी के लिए होगा, ऑड और इवन सभी के लिए क्या हो जाएंगे, माइनस tan थीटा. And since tan pi plus theta, this angle lie in third quadrant, and in third quadrant tan is positive and pi no change, so tan theta, and tan 2 pi plus theta, this angle lie in first quadrant, 2 pi plus theta. In first quadrant all positive, 2 pi no change, same as tan theta. So your coefficient odd, your coefficient even, in both cases value is the same. So therefore formula is tan n pi plus theta is same as tan theta for all n belongs to z. अब यह फॉर्मूला भी नोट कर लेंगे. नाउ एक्सरसाइज 3.2, आप सेम एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos minus 1710 degree. Cos, so first is formula cos minus theta, same as cos theta, so this equal to cos 1710, since cos minus x is equal to cos x. अब 1710 को हम कैसे लिखें, चूँकि आप एंगल जान रहे हो 0 से 90 के बीच में ही, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला ये सब यूज़ करेंगे, ये सब फॉर्मूला यूज़ करना है. तो आप 180 या 360 किसी पे भी चेंज कर सकते हो. सपोज करो 180 पे कर रहे हैं, सो दिस कैन रिटर्न cos
10 इंटू 180 दैट इज 10 पाई और 10 इंटू 180, 10 इंटू 180 मीन्स 1800 माइनस करना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यह 1710 है, यह हो गया 1800, 1800 माइनस 90 बिकम्स 1710. Then use formula cos n pi minus theta. Here n is what? Even. When n is even, then what is the value? Negative or positive? What is value? N is even. Even case value is positive. And 180 no change. That is cos 90 degree, and cos 90 degree is equal to 0. Formula is n pi minus theta. Since cos n pi minus theta is equal to cos theta when n is even, if n is even, यहाँ पे even है. So now exercise 3.2 बन जाएगा क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल जैसा है. So exercise 3.2 होमवर्क. एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क, इसको आप लगा लोगे. ओके.